नमस्कार। क्लास 11th केमिस्ट्री में आज हम सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पर आधारित न्यूमेरिकल्स पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो में दिस वीडियो कंटेन्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन मोल concepts, significant figure and empirical and molecular formula. First, calculate the molar mass of the following: H2O, B CO2, C CH4 and D ammonia NH3. We know that molar mass of the molecule is the sum of the atomic mass. In case of H2O, hydrogen, atomic mass of hydrogen is 1 and number of atoms is 2, therefore 2 plus atomic mass of oxygen 16 equal to 18. Molar mass of H2 is 18. Next, carbon dioxide, atomic mass of carbon is 12, atomic mass of oxygen is 16 and 2 atom, therefore 12 plus 16 into 2 equal to 44. Molar mass of CO2 is 44. Next is methane CH4, atomic mass of carbon is 12 and number of hydrogen is 4. 1 multiplied by 4 equal to 6. 12 plus 4 equal to 16. Molar mass of methane is 16. In case of ammonia, the atomic mass of nitrogen is 14. Atomic mass of hydrogen is 1. Number of atom is 3. 1 multiplied by 3. 14 plus 3 equal to 17. Molar mass of ammonia is 17. Second, calculate the following: A, number of mole of carbon in 3 mole of C2H6. B, number of mole of hydrogen in 3 mole of ethane C2H6. तो नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन इन 3 मोल ऑफ एथेन कैलकुलेट करेंगे हम। तो 1 मोल ऑफ एथेन C2H6 कंटेन 2 मोल कार्बन, ये देखिए। Therefore 3 मोल ऑफ एथेन कंटेन 6 मोल ऑफ कार्बन, तो आंसर आएगा यहाँ पे 6 मोल कार्बन। फिर नेक्स्ट, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन इन 3 मोल ऑफ एथेन। 1 mole of C2H6 contains 6 mole of hydrogen. This is 6 mole. Hence 3 mole of ethane contains 6 into 3 equal to 18 mole of hydrogen. तो यहाँ आंसर होगा 18 mole. Calculate the mass percentage of each element present in calcium carbonate. Molar mass of calcium carbonate equal to sum of the atomic mass of the each element. Atomic mass of calcium is 40, atomic mass of carbon is 12, atomic mass of oxygen is 16, number of atom is 3, 16 into 3. Therefore, total molar mass of the calcium carbonate is 100. We know that mass percentage equal to mass of the element upon molar mass of the compound into 100. Mass percentage of calcium equal to mass of the mass percentage of calcium equal to mass of the calcium, atomic mass of the calcium upon molar mass. Total molar mass is 100 into 100 equal to 40%. Hence mass percentage of calcium equal to 40%. Similarly, mass percentage of carbon equal to 12 upon 100 into 100 equal to 12%, and mass percentage of oxygen equal to 48 upon 100 into 100 equal to 48%. So with the help of this formula, we can determine the mass percentage of each element present in the molecule. Next problem, calculate the amount of H2O produced by combustion of 16 gram of methane.
तो फर्स्ट वी राइट combustion equation of methane CH4 plus 2O2 equal to CO2 plus 2H2O. In this reaction, 1 mole of methane produces 2 mole of water. 1 mole of methane, this is 2 mole of water. 1 mole of methane equal to 16 gram of methane. Its molar mass of methane is 16 gram. And 2 mole of water equal to वाटर का जो मोलर मास आपने कैलकुलेट किया 18, 2 into 18 equal to 36 gram of water. It means 16 gram of methane produce 36 gram of water. तो यहाँ आंसर होगा 36 gram of H2. Next, how many moles of methane are required for combustion to produce 22 gram CO2? So first we write combustion equation of methane CH4 plus 2O2 equal to CO2 plus 2H2. In this reaction, 1 mole of methane produces 1 mole of CO2. 1 mole of CO2 equal to 44 gram of CO2 because molar mass of CO2 is 44 gram. 44 gram CO2 is produced by 1 mole of methane in this reaction. 1 mole methane produce 44 gram of CO2. It means 44 gram of CO2 is produced by 1 mole of methane. और जो क्वेश्चन है उसमें दिया है 22 ग्राम, hence 22 ग्राम CO2 produced by 22 upon 44 equal to 0.5 mole CO2. और यहाँ जो 22 ग्राम CO2 है CO2, तो 0.5 mole of CO2 produced by 0.5 mole of methane. तो यहाँ आंसर हो जाएगा 0.5 mole methane. Next, calculate the amount of carbon dioxide that could be produced when A, 1 mole of carbon burnt in air, B, 1 mole of carbon is burnt in 16 gram of dioxygen, C, 2 mole of carbon is burnt in 16 gram of dioxygen. First, 1 mole of carbon burnt in air. So carbon react with oxygen to produce carbon dioxide. 1 mole of carbon से यहाँ पे 44 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस हो रही है. तो यहाँ आंसर होगा कि when 1 mole carbon is burnt in air, 44 gram of CO2 is produced. B, 1 mole of carbon is burnt in 16 gram of dioxygen. C plus O2 equal to CO2. 1 mole of carbon, 1 mole of oxygen equal to 1 mole of CO2, that is 44 gram of CO2. अब देखिए यहाँ 1 मोल जो ऑक्सीजन है वो that is equal to 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है. तो 1 मोल कार्बन को जब 16 ग्राम से बर्न करेंगे तो यहाँ इक्वेशन बनेगी 44 upon 32 into 16. तो ये हो जाएगा 22 ग्राम ऑफ CO2. तो यहाँ आंसर होगा 1 मोल कार्बन when burnt in 16 gram of dioxin, 22 gram of CO2 is produced. Next, 2 mole of carbon is burnt in 16 gram of dioxin. अब यहाँ कार्बन के मोल हम 2 करेंगे, पर जो इक्वेशन है वो है 1 मोल प्लस ये, तो 1 मोल प्लस 1 इक्वल टू 1 मोल CO2. अब डायऑक्सिन इज द लिमिटिंग रीजेंट यहाँ पे, ठीक है. तो 32 ग्राम जब ऑक्सीजन रिएक्ट करती है 1 मोल से, तो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी 0.5 मोल से. तो 0.5 मोल कार्बन से जब रिड्यूस वो रिएक्शन होगी तो यहाँ पर जो है ये कार्बन का जैसे आप 0.5 मोल करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी 0.5 मोल हो जाएगी. दैट इज इक्वल टू 22 ग्राम ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस्ड.
How much copper can be obtained from 16 gram of copper sulphate? तो फर्स्ट तो मोलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट निकालेंगे हम. 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट इक्वल टू 63.5 एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 32 एटॉमिक मास ऑफ सल्फर प्लस 16 एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन into 4 equal to 159.5 gram. In a 159.5 gram copper sulfate, 63.5 gram copper is present. From 100 gram copper sulfate, 63.5 upon 159.5 into 100, that will be equal to 39.8 gram copper is obtained. Hence, 39.81 gram copper is obtained from 100 gram of copper sulfate. तो सिंपल सा है कि आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं. Express the following significant figure in scientific notation. A 0.0048. अब यहाँ पर देखिए 4.8 और ये 1 2 3, तो यहाँ 4.8 into 10 to the power minus 3 कर देंगे. फिर 234,000, तो यहाँ कर दिया हमने 2.34 और 1 2 3 4 5, तो 10 to the power 5 में इसको हम राइट कर सकते हैं. फिर 6.0012, तो इसको ऐसे लिखेंगे. फिर नेक्स्ट 8008, तो 8.008 into 10 to the power 3 1 2 3 और 500, तो यहाँ 5 पे पॉइंट लगा देंगे और ये 10 to the power 2 में चला जाएगा, तो 5 into 10 to the power 2. What do you mean by 0.53 moles Na2CO3 and 0.53 m Na2CO3? We know that atomic mass of sodium is 23, atomic mass of carbon is 12, atomic mass of oxygen is 16. Hence, the molar mass of Na2CO3 equal to 23 into 2 plus 12 plus 16 into 3 equal to 106. So 1 mole of Na2CO3 equal to 106 gram. Hence, the 0.5 mole Na2CO3 equal to just half कर देंगे तो 53 gram. तो यहाँ मीनिंग होता है कि 0.53 मोल Na2CO3 means 53 gram Na2CO3. And the meaning of 0.5 m Na2CO3, it means 0.5 mole Na2CO3 present in 1 liter. Hence 53 gram Na2CO3 present in 1 liter. क्योंकि हाफ मोल ले लिए यहाँ पे, तो हाफ मोल यानी 53 ग्राम Na2CO3 present in 1 liter. Next, determine the empirical formula of an oxide of iron which has 69.9% iron and 30.1% dioxygen by mass. तो यहाँ टेबल बनेगी एलिमेंट, परसेंटेज, एटॉमिक मास, रिलेटिव मास, सिंपल रेशियो, होल नंबर. एलिमेंट में लेंगे आयरन और ऑक्सीजन, इनके परसेंटेज दिए 69.9, ऑक्सीजन का दिया 30.1, एटॉमिक मास 55.85, ये आयरन का होता है, और एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16. रिलेटिव मास कैलकुलेट करेंगे तो 69.9 divided by 55.85, that will be equal to 1.25. In case of oxygen, 30.1 divided by 16, that will be equal to 1.88. अब इसमें स्मॉलेस्ट नंबर है 1.25, तो 1.25 से 1.25 को डिवाइड करेंगे, that will be equal to 1, and 1.88 divided by 1.25, that will be equal to 1.5. अब यहाँ जो सिंपल रेशियो हम देख रहे हैं ये फ्रैक्शन में आ रहा है,
इसको होल नंबर में चेंज करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1:2, 1 into 2 equal to 2 and 1.5 into 2 equal to 3. Hence the ratio of iron and oxygen is 2:3, 2:3 ratio. And so the empirical formula is Fe2O3. तो यहाँ पे empirical formula आप कैलकुलेट कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. तो ये क्लास 11th में जो सम बेसिक कंसेप्ट है उस पर आधारित आज हमने न्यूमेरिकल्स पर चर्चा की है, और ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है. यदि आपको 11th में ये कंसेप्ट समझ में आ जाता है तो आप आगे की जितनी भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो JEE हो चाहे नीट हो, आप आसानी से उसको क्लियर कर सकते हैं. तो ये बहुत बेसिक्स चैप्टर के पॉइंट्स हैं, इनको जरूर करिए. थैंक यू.